Morning, good afternoon, everyone. Good day, good afternoon. I hope everyone is ready for 2 expiries today. We'll wait a few minutes for our experts to join and for more people to join in, and then we will start. I hope I'm clearly audible. आप yes लिख सकते हैं in chat. Hello, good afternoon. Okay, thanks for the confirmation. Good afternoon, Darshan ji. Good afternoon, Nikhil ji, Rahul ji. Good afternoon, good afternoon. So I guess the experts are here. Hi, Auroji. Hi. Hi, Imran ji. So guys, tomorrow we have a holiday on the occasion of Muharram, and that's why we have 2 expiries today, Bank Nifty and FINNifty. हमारे साथ हैं निकुंज सर and अर्पित सर. दोनों ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, दोनों साथ में ही हैं. जो एक्सपायरी सेशन होगा दोनों साथ में ही लेंगे. We will have Nikunj sir who will be the face for today's session. I can see people asking a lot of queries. We will take this up if we have time, as our focus will be on the expiry. Totally depends कि market में कैसा moment है and how is everything going. Sir, I hope you can hear me clearly. Yes, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah, I'll just share my screen and we'll start in 2 minutes. Sure, sir. Right. Meanwhile, guys, I just want to announce 2 things. Is Friday 4 p.m. we have a special pre-budget session with our expert Dharmesh sir, and next Friday we have a post-budget session with Chandan sir. आप सब लोग काफी दिन से बोल रहे थे कि चंदन सर नहीं आ रहे, चंदन सर नहीं आ रहे. So we will be having these 2 sessions around budget, and then we'll start our knowledge series जहाँ पे हम आपको candlesticks, chart patterns ये सब बताएंगे, सिखाएंगे and how this takes place. And also we have a pre-crude oil expiry session today at 6 p.m. So don't forget to join. And yes, Nikunj sir, we are all set. You can turn on your camera, you can unmute and start the session. So my screen is visible, right? Yes, sir. Your screen is visible. Okay. The chart now? Yes, the chart is also visible, sir. Perfect. So we'll start. So good afternoon, everyone. Welcome to the weekly expiry. आज 2 expiry है, as we all know, FINNifty and BankNifty. But start करेंगे हमारे major index के साथ. Nifty जिसने आज fresh all time high मारा है 24,661 का. बट ऊपर से हमने देखा है कि सुबह से ही थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी में इन द लास्ट आवर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है, लेकिन कंपैरेटिवली निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 3 इंडेक्सेस, एंड मेनली बिकॉज सेक्टर रोटेशन हो जाता है. कभी आईटी इंडेक्स आ जाता है, कभी आज जैसे कि एफएमसीजी इंडेक्स हैज बीन ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग व्हेन एचयूएल, डाबर, मैरिको दे आर ट्राइंग टू होल्ड द इंडेक्स अफ्लोट. सो निफ्टी की बात करें तो जब तक 24,400 और 300 इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बायस पॉजिटिव रहेगा हमारा. ऊपर में स्लो एंड स्टेडीली 24,700, 800 और इवेंचुअली 25,000 स्लो एंड स्टेडी द इंडेक्स शुड स्केल अप टू दोस लेवल्स प्रोवाइडेड 24,200. और अगर मीडियम टर्म की शॉर्ट टर्म की बात करें तो जब तक 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, the bias will be staying positive and buy and decline stance should continue in Nifty. अभी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आज एक्सपायरी डे है, लेकिन if you can see on the chart, ये 15-minute chart है, it has been trading in a very narrow band of almost 500 से लेके 350, that is 120 to 150 points का range है. Given it's expiry weekly expiry day, but still एकदम narrow consolidation mode में आ गया है, और comparatively bank nifty has been underperforming the nifty index. So mainly कुछ प्राइवेट बैंक्स जैसे कि आज आईसीआईसीआई स्ट्रॉन्ग है तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक थोड़ी सॉफ्ट है. तो उसमें भी कल जैसे कि पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग थे, एसबीआई स्ट्रॉन्ग था,
और दूसरे छोटे PSU बैंक स्ट्रॉन्ग थे, पर उनका कुछ ज्यादा मेजर वेटेज नहीं है बैंक निफ्टी में, which is why the index as a whole from past 8 trading session it has been trading in this narrow band of 600-700 points, wherein ऊपर में 52,800 है और नीचे में 51,700 and 800, तो एक ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट का रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा बैकफुट पे और अंडर परफॉर्म कर रहा है द निफ्टी इंडेक्स. So as of now, हमारा bias on as the weekly expiry per se is buy and decline stance ही continue रहेगा, and बैंक निफ्टी का वीकली VWAP है 52,500 और we are almost trading 110 points lower than the weekly VWAP, so which clearly suggests that upside is capped as of now, but buy and declines because the broader time frame का higher time frame का trend is positive and there is no major weakness as such in major private banks, which is why our buy and decline stance continue रहेगा in बैंक निफ्टी. while FINNifty की अगर बात करें जिसकी आज एक्सपायरी है जिसकी भी, तो FINNifty भी अगर बात करें फ्रॉम लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ बैंड ऑफ 300 to 400 पॉइंट्स, वेरी नीचे में 23,400 और 350 और ऊपर में 23,700 और 750, तो ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट के रेंज में 8 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है, वेरी ना ब्रेकआउट about 23,800 should give a fresh clarity with regards, and it can scale up to the fresh all-time high. But as of expiry per se, if you can see, ये 15-minute chart है, सुबह से 23,715 और नीचे में 23,670, तो ये 40-50 पॉइंट्स के रेंज में सुबह से ट्रेड कर रहा है, वेरी ऑलमोस्ट 3-4 hours से इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ 30-40 पॉइंट बैंड. तो we'll see, but our bias is positive. The weekly VWAP of FINNifty is 23,700 and we are trading 30 points below the weekly VWAP, so which clearly suggests that upside is capped, but buy and decline stance continue रहेगा because no major heavyweights में कोई major selling नहीं है and our higher time frame charts are still positive, which is why buy and decline stance will continue in FINNifty as well. As of now, so हमने I think I'll share BTST in the meantime, which is LIC. So I'll just share the chart. So LIC ने एक fresh breakout दिया on the daily scale and almost 6-7 months का consolidation breakout है and with very huge volumes. So breakout with strong volumes clearly suggests that the momentum and the trend should continue the higher side. So the BTST is on LIC, which is LIC, the insurance company, wherein we have to buy at CAP, keep a stop of 1095 and look for 1140 and 1160 on the higher side. So BTST idea हमने पहले शेयर कर दिया है, wherein it's a very convincing breakout. Weekly chart भी देखे तो almost 8-9 months का consolidation breakout है, and the stock has a potential to even clear the lifetime high of 1170, which it made I guess few months back. So BTST idea हमने पहले शेयर कर दिया है. LIC, which is Life Insurance Corporation of India, buy at CMP, keep a stop of 1095 and look for 1140 and 1150 on the higher side. And बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की अगर बात करें तो जो स्ट्राइक्स हमारे रडार पर है एज ऑफ नाउ, बैंक निफ्टी में 52,500 का कॉल ऑप्शन है, विच इज ट्रेडिंग एट 52,300 कॉल ऑप्शन वी आर ट्रैकिंग. सो बैंक निफ्टी का तो इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 110. So we'll wait and see how to play this. While FINNifty की अगर बात करें तो we are tracking 23,600 call, जो currently is quoting at 75. So ये दो strikes हमारे रडार पर है, बैंक निफ्टी के 52,300 call option and FINNifty का 23,600 call option. Both are in the money call option, जिसमें हमने we are trying to avoid the time decay loss, जो option bias के लिए एक almost
disadvantage है. So we are trying to eliminate that risk out of it by taking an in the money option in both the indices. So as of now we are tracking. We'll surely update. As of now we'll take a trade if the setup is provided. Setup is clear and visible. तो हम FINNifty में first we'll try to capture a trade, and if the momentum is there, then we'll definitely move ahead and give a trade in BankNifty as well. But as of now, clearer structure and more conviction is in FINNifty, wherein it is clearly holding 23,650 on the lower levels, while 23,700 resistance point play कर रहा है. So we try to play this 40 point का range, wherein we look to buy एक थोड़ा सा dip आए तो 23,600 call option. As and when we'll find a convenient buying range, we'll definitely update on the same. So in the meantime, we have shared a BTSC on LIC, Life Insurance Corporation of India. So that is a high conviction trade wherein you can definitely make 3-4% quick move in that. So even Bajaj Auto, after the quarterly numbers, the results were marginally ahead of the expectation in Bajaj Auto, and we did shared an intraday trade on Bajaj Auto. So even Bajaj Auto, you can take as a BTST, wherein I'll just share the chart on Badhao Auto. It's a consolidation, clear consolidation breakout of almost 2 weeks, and a strong breakout with very huge volumes on daily scale. So current market price is 9810. Keep a stop of 9700 and look for 9860 and 9890 on the higher side. So Bajaj Auto भी आप BTST as a play कर सकते हो, wherein you can buy at CMT, keep a stop of 9700 and look for 9900 on the higher side. So 2 stock ideas we have given where the action is actually basically so stock specific moves हमने देखे last 2-3 days से, wherein the index has been underperforming or consolidating, but sector rotation has been visible. आज जैसे कि FMCG की बात करें, Marico है and Dabur hai, so they are showing very strong setup and strong breakout. Even Marico आप देखें 670 का एक very beautiful chart structure है, and what do you say, a continuation setup है wherein easily it can scale to 720 and 730. थोड़ा सा slow low beta counter है Marico, तो थोड़ा सा slow रहेगा, but positionally it will definitely it can definitely see 700 and 710 levels on the higher side. Even Dabur for that matter, I think it has given a huge consolidation breakout, wherein 630, 620 के support से it can definitely scale to 660 and 670 on the higher side. So sector rotation होते रहता है. आज FMCG है, एक दिन पहले IT था, तो कोई ना कोई इंडेक्स को मैनेज कर लेता है. बट बैंक निफ्टी में जो सिलेक्ट काउंटर्स जो हेवी वेट्स है उनके ऊपर ही दारोमदार रहता है. तो विल सी हाउ टू प्ले, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी FINNifty के हम ट्रेड सेटअप की वेट कर रहे हैं, wherein we are tracking 23,600 call option. So if we get a setup and we get a buy entry point, we'll definitely update on the same. So in the meantime, I think we can take few queries if we have, Anuj. Sure, sir. Yeah. Sir, I guess we can start with SRF. So SRF की बात करें तो एक ऑलमोस्ट 8-9 डेज का कंसोलिडेशन ही है, बट ब्रॉडर उसका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है, बट नीचे से अच्छी रिकवरी देखी गई है ना कंसोलिडेशन में. तो ऊपर में 2420-25 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक कर देता है तो वापस 2460-70 की ऊपर में प्लेस आ सकता है, while 2350 is a very strong support for SRF. So Tata Motors bought at 398. 398. Okay, so I think auto as a sector has been outperforming. So it be it M&M, be it Escorts, be it TVS Motors. So Bajaj Auto जैसे कि हमने बात की, तो auto as a sector whole pack is making fresh life highs, even Maruti for that matter. So Tata Motors उनकी entry point बहुत अच्छी है, तो I'll just give weekly time frame पे support दे देता हूँ, wherein if it breaks 940 or 930, only then you have to exit your position. Otherwise आप continue रहिए buy ऊपर में slow and steadily 1150-1200 targets Tata Motors में easily attainable है. So Tata Power bought at
205. Oh, so Tata Power, I think when I took the last session last week, we had initiated a CDI idea on Tata Power. So I think एक consolidation break में ही है, एक जो breakout यहाँ से expected है 445 के ऊपर, अगर वो breakout आ जाता है तो stock can easily scale to 460, 475 levels. While नीचे में support है 425 का, उनका entry point is at a very good entry point है, तो एक 400 का स्टॉप से उनको होल्ड करना चाहिए. ऊपर में इट कैन इजीली स्केल टू 480, 490. अगर 1-2 इयर्स का टाइम होराइजन है तो इजीली 550, 600 कैन बी अटेनेबल इन टाटा. सर बजट के पहले लेने वाले कौन से शेयर्स हैं, आई मीन कौन से स्टॉक्स हैं? सी बजट मेनली इसमें रेल बजट और दी यूनियन बजट दोनों साथ में ही होगा. तो रेलवे स्टॉक्स में ऑलरेडी एक शार्प अप आ गया है. द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल इन ईदर रेल स्टॉक्स और दी अदर पीएसयू स्टॉक्स. बट रेलवे में अगर आपका टाइम होराइजन 1-2 इयर्स का है तो यू कैन एक्यूमुलेट आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, these three in the rail PSUs. While defense में अगर बात करें शिप बिल्डिंग में तो मैस्गाउडॉक और कोचिन शिपयार्ड ये और HAL, these 6 stocks you can slowly accumulate and keep a time horizon of 2-3 years, and then you'll make good money in these 6 stocks. Sir, your view on Nykaa? नाइका में आज अच्छा वॉल्यूम है लेकिन स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही है. लेकिन जब तक 175 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 190 की जगह है, तो जब तक 175 नहीं ब्रेक करता तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 175, लुक फॉर 190 ऑन द हायर साइड इन नाइका. सर बैंक निफ्टी FINNifty ट्रेड्स? बैंक निफ्टी तो आई थिंक फर्स्ट विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट समथिंग इन FINNifty. सो FINNifty में अगर बात करें तो एक नैरो बैंड में ही ट्रेड कर रहा है. तो 23,600 का कॉल ऑप्शन है जो हम कह रहे हैं कि वो हम ट्रैक कर रहे हैं. तो एज एन व्हेन इफ वी गेट अ गुड एंट्री पॉइंट, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अ ट्रेड एंड देन होपिंग दैट इट वर्क्स. सो होप ट्रेड नहीं करना है. एंड कैपिटल प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इक्विटी मार्केट. आज बचोगे तो कल आप ट्रेड ले पाओगे. आज सिर्फ ट्रेड लेने के लिए लेने में कोई ये नहीं. तो एज ऑफ नाउ द करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 65-66. तो विल ट्राई टू बाय इन बिटवीन. आई विल गिव यू अ बाइंग रेंज. 23,600 का कॉल ऑप्शन है. कीप हमारी बाइंग रेंज रहेगी 55 से 60 के बीच में, एंड विल कीप अ स्टॉप ऑफ 40 एंड विल look for a target of 75 to 80 on the higher side. So 23,600 FINNifty ka weekly option. We have given a buying range. The buying range is 55 to 60. Keep a stop of 40 and look for 75 to 80 on the higher side. So I've shared the levels on the FINNifty. So we'll see if the trade gets activated. We'll definitely update on the same. As of now, we'll see how the trade plays out. So in the meantime, we can take queries. I think LICIP, I guess I'll give an update when I think it has seen 8 to 10 points ka move from where we started the session from. But still, I think जिसने लिया है LIC Life Insurance Corporation, it can definitely scale higher to 1150, 1160 odd levels. So in the meantime, we'll take queries. So JSW Steel bought at 900. JSW Steel bought at 900. 900. Okay, good. So I think you should keep a stop of 915 and continue to hold. ऊपर में 950, 960 is the target where you can look for in JSW Steel. अर्पित सर निकुंज सर के साथ ही हैं, मयूर जी दोनों साथ में मिलके ही अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं. सर योर व्यू ऑन विप्रो? विप्रो आई थिंक आफ्टर 3 दिन पहले गैप अप दिया था और स्ट्रॉन्ग मूव आया था, और आज 2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव है. तो जब तक ये गैप नहीं फिल करता, विच इज 540,
सो 540 से 535, तो 535 का स्टॉप से आप होल्ड कीजिए, अगर आपका पोजीशन है तो 535 के स्टॉप से होल्ड कीजिए। ऊपर में देयर इज रूम फॉर 580 एंड 595 गोइंग अहेड इन विप्रो। थोड़ा सा लो बीटा है बट इट विल डेफिनेटली गिव गुड रिटर्न्स फॉर यू इन द स्टॉक। एंड फिन निफ्टी की अगर बात करें तो we don't want to jump into any trade, so which is why we want to buy in the dip wherein you get a good risk reward ratio. And I think we have our trade is initiated, we have seen a tick of 60, so we have to maintain a stop of 40 and look for 75 to 80 on the higher side. So फिन निफ्टी का ट्रेड हमारा एक्टिव हो गया है, so continue to maintain your stop, and if you get a churning opportunity you should definitely churn out the position. As of now my trade active हो गया है, keep a stop of 40 and look for 75 to 80 on the higher side. The next we have is Zomato. I think Zomato is a fantastic stock. थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल्स पे आया है, लेकिन 215 and 210 is a good re-entry point in Zomato. I think long term structure is positive. Strong breakout आया है वीकली चार्ट पे, तो एक थोड़ा सा कूल ऑफ है, but 215 to 210 is a good re-entry point in Zomato, and you can look for 230 on the higher side in Zomato. So Irida. आई थिंक इरडा क्वार्टरली नंबर्स के बाद थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आया है, 2 दिन में 310 से द स्टॉक हैज कूल्ड ऑफ टू 270। आई थिंक नीचे में 260 से 250 इज अ गुड री एंट्री पॉइंट इन इरडा, because the higher time structure is positive, and even the weekly chart the stock is making higher highs and strong breakout दिया है 280 के आसपास से 240 के आसपास से। तो I think you should continue to be in that IDA, and if you get a re-entry point, I'll give you 260 से 250 के बीच में आप re-enter कर सकते हो IDA and look for 290 on the higher side. So J&K Bank. So J&K Bank थोड़ा सा I think structure थोड़ा सा sideways है, but नीचे में 105 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक 105 नहीं ब्रेक करता है आई थिंक ऊपर में स्लो एंड स्टेडी 120 to 125 आ सकता है J&K बैंक। So Jio Financial. Just a minute. Jio आई थिंक पोस्ट दी रिजल्ट थोड़ा सा आज करेक्टिव 2-3% का थोड़ा सा करेक्शन देखा गया है, बट नीचे में 335 से 330 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो एज ऑफ नाउ आज गैप डाउन हुआ है बिकॉज कल क्वार्टरली नंबर्स थोड़ा सा इनलाइन था, तो आई थिंक 335 से 330 इज अ गुड डिमांड जोन इन जियो, एंड ऊपर में 365 से 360 एक ट्रेडिंग रेंज है, तो नीचे में 330 335 के पास मिलता है, तो यू शुड एंटर इनटू इट एंड लुक फॉर 345 एंड 350 ऑन द हायर साइड। So Genius Power bought at 370. Genius Power. And then probably we can have an update on the FINNifty trade. Yeah, sure. So Genius Power एक consolidation में ही है, wherein 354 नीचे में है and ऊपर में 360 का 380 का लेवल है, तो एक रेंज में ही है। जब तक 345 नहीं ब्रेक करता है आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू बी लॉन्ग इन जीनियस पावर, बट 345 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आ सकता है इन द स्टॉक। सो आई जस्ट ट्राई टू गेट द कोट। The CMP is in the CMP of 23,600 call is 55 to 56, जो हमारा बाइंग रेंज है उसी में ट्रेड कर रहा है, तो एज ऑफ नाउ नो पैनिक, nothing to panic about in the trade. So keep a stop of 40 and continue to be long in the 23,600 call. एक uptick आएगा wherein you will get your exit opportunity, क्योंकि सुबह से 23,650 and 630 के आसपास एक डिमांड जोन बन रहा है, इवन इन द 15 मिनट चार्ट जो हम शेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं
ऊपर में थोड़ा सा एक capped upside है, लेकिन support based buying continue, which is why we asked to buy in the dip. When we started the session, the 27,600 call option was quoting at 67, 69. So which is why we waited for the dip, so that you get a better risk reward and you get a better entry point. So capital आपका कम अगर नुकसान होता भी है तो कम हो. So which is why we generally ask to buy in the dip and not chase the price and try to run after the option premium, when you end up making the buying at the highest price and then waiting and hoping for the trade to work. So as of now, status quo, I think buying range के पास ही है 55, 56 the current market price. So any major update will definitely update on the same. And also, I think we have shared two stock ideas as well. Even कोई slow, positional trader है, he can look into the FMCG names like Marico and Dabur, wherein they have given a strong breakout on the daily as well as weekly scale. So, and they are low beta counters. So low beta है तो market अगर 5% घटता है तो ये hardly 1-2% भी नहीं घटेगा. So accordingly, on the rising as well, it is the same. But I think people who are looking for positional trade, they should get into Dabur and Marico. So as of now, FINNifty option is at 55, 56. Lackluster है, no major swing as such. But we waited for a dip to get a better entry point. So ये हमारे एक अच्छा हमारे favor में work कर रहा है. Which is why had we bought it at 69 or whatever the current market price was quoting it back then, we would be incurring 10-15 points of loss. So to safeguard from that, we asked to buy in dip, and as of now, it is trading at within our range only, buying range. It is 55 to 60. And if you get a small uptick also, I think a smart trader should continue to churn the position. As we have been seeing, there are a lot of people who are continuously joining our session. They know how to do option buying with us. So they usually, even before we asking them to book, they generally book into the trade. So the people who are regularly joining and attending all our sessions are becoming smarter in option buying. That definitely we can say, and it is all courtesy of Mr. Anuj. I think he's doing a noble cause. Sir, it's just a team effort. But still, I think we have seen the improvement definitely, because previously we used to ask them to exit, but we जो regularly कर रहे हैं, and the names that have been visible, which we are also seeing, they keep booking their profits regularly. So I think that is the way to go. Because देशिक जी ने 52 पे लिया है, 58 पे एग्जिट किया, so congratulations, आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया. सर, we have a question कि सर स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे रख सकते हैं क्या, around 35? No. I think stop is more than enough. अगर stop होता है तो वो trade ही wrong है. That is what our theory is, and even Arpit sir जो BankNifty expert है हमारे, so it is a combined view. It is not my view. It is a joint view. So although you may not able to see Arpit sir, but he's there and he's trying to help you sitting next to me. So rest assured you are in safe hands. So don't worry. And 40 का अगर stop होता है तो 40 भी नहीं रुकेगा, 35 भी नहीं रुकेगा. So that is what it is. Because एक consolidation में है, तो we are trying to play this consolidation only, which is why we are trying to buy at support and then hoping for 10-15 point का uptick, then you can get an exit. So जिन्होंने entry नहीं लिया, can they enter right now at 50 or they should avoid? I think if they 40 का stop है ना, till the stop is not it, why we have to preempt, they should enter. उनका और risk कम हो जाएगा, 10 point का stop loss. So that would be a more perfect entry for them. So that would be a more smarter entry, in fact. Chetan ji, if you're talking about yesterday's session, so yesterday we made a good profit. Same goes for the Sensex जो मधुर sir ने लिया था. So I guess that will be all right now. We are just tracking the FINNifty trade. उसके update के बाद में we will be wrapping up the session. So the option अभी 62, 63 आया है. So I think जिसने 50 में whoever was asking,
that person would have made 12 points ka swing. So this is what it is. The option premiums and the volatility has gone so low that we have to scramble and try to find a trade. But we try our best. Even Arpit sir is doing his best to get some trade out of it, because do expiry hai, and we don't want it to be no trade expiry. So we tried our best. We tried to find the best trade possible. For it's on the option is at 63, 64 now. So thoda sa move aaya hai, at least some profit is better than 66. even 66 now. Almost अच्छा नीचे से 12-15 point का swing मिला है in the option. So I think this would be the utmost best we can do in this very narrow range expiry, wherein दो expiry है, heavyweight expiry है, but there is no movement in. So 66 now. So almost. Guys, जो भी 2, 5, 10 point का movement हमें मिला, please book profit and exit the trade. Yes, I think something is better than nothing. So we tried our best to get something out of 66, 67 hai, so I think. I can see people writing exited cost to cost, boom now, profit 8,000 का, 400 का, 52 to 63, 800 रुपए का, 2,000 का. Good. Yes, Balwinder ji, छोटे मोटे profits भी अगर आ रहे हैं तो please book and exit the trade. Our trade is officially closed now. We have mentioned this कि please book your profits and exit. कुछ लोगों को 10 पॉइंट का मिला होगा, कुछ लोगों को 15 का, कुछ लोगों को 2 से 5 पॉइंट का भी मिला होगा. Yes. Because the range is only 15 points, so we tried to get the whole 15 points out. So I think we tried our best. Whatever we got. Profit, but no loss is also profit. Yeah, exactly. So I guess guys that will be all for today. हमने एक छोटा सा profit book किया, but it's really great कि लोग खुद से एनालिसिस करके जैसे 50 पॉइंट पे है वो खुद से वहाँ एंटर करे rather than waiting for us to mention it. So congratulations जितनों ने भी प्रॉफिट किया. We have given 2 BTSTs for the day and we try to take your queries, but still हम नहीं ले पाए. So feel free to drop it on Stockholm. We will be happy to answer. See you today at 6 PM. Then again day after tomorrow at 9:30 AM session. So thank you everyone. See you. Thank you so much. Thank you, Nikunj sir. Thank you so much, Anuj. Thank you everyone. Have a good day.